पार्वती माँ के प्रिय पुत्र और हम सबके चहीते गणपति बप्पा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो गणेश जी हमको याद दिलाते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गणेश जी को अगर हम गौर से देखें तो उनका सर हाथी जैसा है और उनका शरीर भी दिखने में बहुत भारी है और इसके वजह से उनका कई बार मजाक उड़ाया गया। फिर भी अपने बुद्धि और ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने खुद को साबित किया और आज भी हर पूजा को शुरू करने से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के दुनिया में जहां हर कोई अपनी फेक आइडेंटिटी बिल्ड करने में लगा हुआ है, तब गणेश जी हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारी क्वालिटी से होती है, ना कि हमारे लुक्स से। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। 4 जनवरी 1643 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका जन्म समय से पहले हो गया, इसलिए जन्म के समय बहुत कमजोर था। इसके जन्म से 3 महीने पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए जब ये 3 साल का हुआ तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और इस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। वहीं के छोटे से एक स्कूल में इसने अपनी पढ़ाई की और जब ये 15 साल का हुआ तो इसके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। तब इसकी माँ वापस आई और इसका स्कूल छुड़वाकर खेतों में काम करने को कहा, लेकिन इस लड़के को ये सब पसंद नहीं था तो वो वापस अपने स्कूल जाने लगा। 19 साल की उम्र में इस लड़के ने शादी की, लेकिन उस लड़की ने भी इसे धोखा दिया और वो इसे छोड़कर चली गई और इसी वजह से इस लड़के ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी पढ़ाई में वापस लग गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर यही लड़का विश्व का प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर आइजैक न्यूटन की। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी और जबरदस्त मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम पूछे लॉ ऑफ मोशन को किसने डिस्कवर किया, एवरीवन सेज आइजैक न्यूटन। बट अगर मैं कहूं कि इसकी डिस्कवरी इंडिया में हुई, वो भी 1700 साल पहले, 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड ने इस बात को प्रूव किया कि 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में लॉ ऑफ मोशंस को कॉन्सेप्ट को समझाया था और बाद में इसका क्रेडिट यूरोपियन वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को दे दिया गया। इस पूरी रिसर्च की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट द रिसर्च। वैशेषिका सूत्रा के फर्स्ट चैप्टर का 20वां श्लोक, जहां पर उन्होंने वेग के बारे में बात की है। वेगा निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, द मीन इज change of motion is due to impressed force. This is first law of motion given by the Newton. Second is वेगा निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु. The main is change of motion is proportional to the impressed force and is in the direction of the force. This is the concept of F is equal to ma, and this is the second law of motion that given by Newton. The third is वेगा संयोग विशेष विरोधी. The main is action and reaction are equal and opposite. And exactly this is the third law of motion that given by Isaac Newton. ये law of motion आज से 1700 साल पहले ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में दिए थे और ऐसे कई सारे एस्ट्रोनॉमी, एटॉमिक, क्वांटम थ्योरी जैसे रिसर्चेस ऋषि कनाद ने वैशेषिका सूत्रा में दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। ऋषि कनाद ही द फादर ऑफ फिजिक्स है, बट यूरोपीय वैज्ञानिक कभी इस बात को मान नहीं सकते थे। अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ नहीं था तो क्यों ब्रिटिशर्स हमारे सारे स्क्रिप्चर्स उठा ले गए? क्यों आज 12 से भी ज्यादा संस्कृत यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में हैं? क्यों आज नासा ऐसी बड़ी स्पेस कंपनी में भी संस्कृत का अलग डिपार्टमेंट है जहां पर वेदों शास्त्रों के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च होती है? क्यों नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को पूरा का पूरा जला दिया गया? उसके सारे ज्ञान को या तो चुरा लिया गया या फिर जला दिया गया। ऐसा क्यों था? क्योंकि जिस विज्ञान को हम नहीं समझते वो जानते हैं कि एक समय पर हम विज्ञान में सबसे ज्यादा एडवांस थे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक डिबेट स्टार्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी के एक अलग कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं, तो मेरी बुक द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, हिंदी में आपकी आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य, दोनों अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाके खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। பெற்ற தாய்தனை மக மறந்தாலும் பிள்ளையை பெரும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும்
கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும் கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும் நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்தோங்கும் நம சிவாயத்தை நான் மறவேனே. जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽसि वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथा शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतन् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्धा तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमालपेता दुःखा
दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेता तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् न विमूढचेता यानं क्षितौ तत्र गतश्च देहो देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः मम त्वमूर्व्यां न यथा तथास्मिन् देहेति मात्रं बत मूढतर्षा शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रं मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि सा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਰ ਡਟ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 10 ਵਸਤੂਲੇ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਅਤਬਾਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰਲੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਟਲਿਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਐਂਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਲੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡੈਜ਼ਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੱਢ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਲੋ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਜਿਉ ਧੁੜ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਐਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। When you spell the word D-I-S-A-B-L-E-D, when you walk by faith and not by sight, our pinnacle of our relationship with God is not when we're blessed, but when we trust in Him no matter what, when we still serve Him despite what we see, despite what we feel, and we still go. We feel inadequate. But when we go, we put a G-O in front of the word disabled. It spells God is able. And how amazing it is that when you leave the chains of torment, of need and want, and a soul that is heavy, and you become free, all you want to do is help someone else be free. They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is
where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, "This too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has." And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, "I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors. Bring me some small canvas. I want to paint." So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears, and I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard, there will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.
ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜੰਮੇ ਵਛੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। A man went to Guru Nanak Sahib and asked, "What is the value of life?" Guru Nanak Ji gave him one stone and said, "Find out the value of this stone, but don't sell it." The man took the stone to an orange seller and asked him what its cost would be. The orange seller saw the shiny stone and said, "You can take 12 oranges and give me the stone." The man apologized and said that the Guru had asked him not to sell it. He went ahead and found a vegetable seller. "What could be the value of this stone?" he asked the vegetable seller. The seller saw the shiny stone and said, "Take 1 sack of potatoes and give me the stone." The man apologized again and said he can't sell it. Further ahead, he went into a jewelry shop and asked the value of the stone. The jeweler saw the stone under a lens and said, "I'll give you 50 lakhs for this stone." When the man shook his head, the jeweler said, all right, take 2 crores, but give me the stone." The man explained that he can't sell the stone. Further ahead, the man saw a precious stone shop and asked the seller the value of this stone. When the precious stone seller saw the big ruby, he lay down a red cloth and put the ruby on it. Then he walked in circles around the ruby and supplicated in front of it. "From where did you bring this priceless ruby from?" he asked. "Even if I sell the whole world and my life, I won't be able to purchase this priceless stone." Stunned and confused, the man returned to the Guru and told him what had happened. "Now tell me, what is the value of life, Guruji?" he asked. Guru Nanak said, "The answers you got from the orange seller, the vegetable seller, the jeweler, and the precious stone seller explains the value of our life. You may be a precious stone, even priceless, but people will value you based on their financial status, their level of information, their belief in you, their motive behind entertaining you, their ambition, and their risk-taking ability. But don't fear. You will surely find someone who will discern your true value. Respect yourself. You are unique. No one can replace you."